So hello guys, welcome back to my channel. I'm back with another video. Today we'll do the derivation of the electric field due to uniformly charged thin sphere. So that this is for today guys, and we'll do the derivation. Let's start the topic. So first of all, I'll write the topic: electric field due to charge sphere, which is uniformly charged sphere. Sorry for the order of the word guys, but the meaning should be clear to you. Okay, so first of all, let's draw a charged sphere. Suppose this is a charged sphere and this has the surface charge density. Let's suppose positively charged sphere. This has a surface charge density sigma, which is equals to q upon a. Okay, surface charge density, the charge per unit area, okay, of the conductor. So it is a surface charge density. So we'll open the formula, to which is equals to q upon area of this. Let's suppose the radius of the sphere to be r. This is a real sphere, this is not any imaginary thing, this is a real conducting sphere. So the surface area of this will be 4 pi r square. That's it. This is the, so here we come to the conclusion, q upon 4 pi r square. Okay, this is the surface charge density of this sphere. Now according to flux, now we'll calculate the flux. The flux through E dot EA will be like C. First of all, draw the Gaussian surface. This is the Gaussian surface of radius r, small r. This is the Gaussian surface of radius small r. So flux through this Gaussian surface, the surface which is imaginary around a charged sphere or a conductor, is called a Gaussian surface. ठीक है, Gaussian surface. तो मतलब अब देखिए guys, मतलब flux through the sphere according to this formula will be C. This will, electric field will go like this, like this, like this. So the angle between the area and the electric field will be 0. So cos, so we will open this formula, EA cos theta here. See, this is the area vector, this is the electric field in all the sides. So the area, the angle between them is 0. So we'll do cos 0 is equals to 1. So EA, we'll open the formula, which is equals to E into 4 pi r square. We'll take the small r, because small r is because the flux is through the surface of the radius r. That is why we'll take the small r. Now we'll calculate the flux through the Gaussian surface. According to Gauss, the flux will be what? Charge upon epsilon naught. So the total charge on the sphere will be, see here we have sigma is equals to q. So q is equals to sigma into 4 pi big R square. Big R square is, that is why, because the charge is on the sphere. ठीक है, बड़ा R इसलिए लिया है क्योंकि चार्ज की बात कर रहे हैं तो इस पे है, और फ्लक्स की बात करेंगे तो ये वाला लेंगे क्योंकि फ्लक्स इस सरफेस से निकल रहा है. तो द फ्लक्स थ्रू दिस विल बी 4 pi r square sigma upon epsilon naught. This is the flux through Gauss. This is the equation 1, this is the equation 2. Now we have flux through both same Gaussian surface, so we'll equate it. So we'll equate it of E into 4 pi r square, small r square, 4 pi big R square sigma upon epsilon naught. ओके, सो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल. ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा, इस फिर बता दे रहा हूँ क्योंकि ये आर स्क्वायर दोनों अलग हैं. सी, आर इज स्मॉलर देन आर, पॉइंट टू बी नोटेड. ओके, नाउ द फाइनल फॉर्मूला विल कम आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द फ्लक्स, this is the electric field through a uniformly charged sphere. This is the formula for the electric field, will extended up to like this. Now we have just found the formula of the sphere, which is sigma r square upon epsilon naught r square. This is the formula. Now we will multiply it with 4 pi. See what will happen, 4 pi sigma r square upon 4 pi epsilon naught r square. Now you can see that 4 pi r square, okay, 4 pi r square was the 4 pi sigma r square was the charge. In the previous page you have seen that 4 pi r square is the charge on the sphere. So the formula will be like this, 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square. Okay, this is the electric field formula for a sphere, charged sphere. Okay guys, so sphere भी एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करता है. ठीक है, इसलिए इसका फॉर्मूला बिल्कुल पॉइंट चार्ज जैसा ही आया है. ठीक है ना, तो एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज. अच्छा गाइस, नाउ विल डिस्कस सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करेंगे इनसाइड द शेल.
इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल क्या होगी, दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, ओके। नाउ दिस इज द व्हाट, दिस इज द Gaussian surface. So electric field inside the sphere will be zero. Always remember, electric field inside the conductor is always zero. Remember that. Okay guys, electric field inside the conductor will always zero. Guys, ये इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें Gaussian surface को ही, ये रहा Gaussian surface, इसको चार्ज ने ही घेर लिया, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो खाक जाएगी, नहीं जा पाएगी ना, क्योंकि Gaussian surface ये है, दिस इज़ द Gaussian surface। अब भाई इसी ने मतलब यही चार्ज के अराउंड गिर गया, और चार्ज कैसा था, पॉजिटिव था, तो ऑब्वियसली बात है दूर फेंकेगा, चारों तरफ से ये दूर फेंकेगा, लाइक दिस विल गो लाइक दिस, तो इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ही नहीं ना। सो टेक्निकली हम ये भी देख सकते हैं, E इंटू 4πr² विल बी ऑल्सो द टर्म जीरो, और E इंटू 4πr² अगर ऊपर जीरो हो जाएगा, विच इज़ लाइक हेयर 4πr² जीरो हो जाता, तो ऑब्वियसली बात है क्या, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर विल बी जीरो। नाउ सेकेंडली गाइज, नाउ अगर कोई पॉइंट बाहर आ जाता है कंडक्टर के, तो सिंपल सा फॉर्मूला है 1/4πε0 Q/r प्लस नया रेडियस, लेट सपोज x दूरी पे है सरफेस से, सो दिस इज दैट, एंड इसका दोनों का स्क्वायर कर देंगे। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस में कोई ग्राफ मांगता है कि ग्राफ क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस का, फील्ड बिल्कुल r डिस्टेंस पे आ गए तो मैक्सिमम हो गई, और फिर वहाँ से धीरे धीरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कम होती है। दिस इज द रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रेडियस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।